तो तुम वहाँ भी आ सकता हूँ मैं। वही कह रहा हूँ क्योंकि वो सिर में बच जाएंगे ना कोई लड़का तो है। ये ठंडा और ये ना वहाँ तक तो जा सकता हूँ। हाँ वहाँ तक एक तो मैं ना चेयर हटाता हूँ। हटा ट्राइपॉड आगे कर लो, उसके बाद नहीं करूँगा। ट्राइपॉड आगे कर लो। सेंटर ले लिया तूने तो अभी। Make sure
अदिति Thank you, ma'am, for inaugurating the annual function, 35th annual day celebration of our St. Andrew's God School, Jagatpuri branch. Now, we already have our traditional auspicious flag lighting ceremony as a tribute to Master the goddess of knowledge. The head of our school is attracting the Dixita and this moment will be unforgettable. The ceremony of flag lighting represents positive and good spirit. This ceremony will spread beyond this.
बोलेगी जीरो सेंटर पे यहाँ लगा दूँ पहले बता दूँ बोलना मत Darkness can be driven out by light. Hate can be driven out by love. Let's wish the light of education takes over the darkness of differences. ठीक है वो दो बोल गए चाहिए या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा देवी सरस्वती कमल चंद्रमा वर तथा मोतियों के समान श्वेत वर्ण जो शुभ रंग धारण किए हुए श्वेत कमल पर आसीन होकर हाथ में उत्तम वीणा से सुशोभित है और हम सभी को विद्या का दान देते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस भव्य महोत्सव की। पेश है आपके सामने माँ सरस्वती की स्तुति। Please put your hands together for the girls who are going to present a graceful and chanting classical dance performance. Our students have practiced a lot for this wonderful blend of grace and energy in classical dance.
Excellently performed. Well done. Now we have got the blessing of Ma Saraswati and our function will be very great now. Thank you for presenting the classical dance form Kathak in such a nice travel dance. Respected parents, I hope you all enjoyed the first show very much. Now, let's get ready for the second one, and it is a special one. As you can see, some tiny thoughts coming on the stage. Respected parents, please put your hands together to encourage these tiny tots who are going to make their stage appearance now. And it is rightly believed that just a look at the smiling faces of our tiny tots doubles the joy on the faces of people around them. So, be ready to welcome the nursery Spanish students
music, videos, and extras. Oh, I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a lucky gummy, funny lucky gummy bear. I'm a gummy bear. Yes, I'm a gummy bear. Oh, I'm a lucky gummy, funny lucky gummy bear.
with us today. Thank you, ma'am, for this occasion of 35th annual celebration of Jagannath branch St. Andrew's Scott School. Now, I would like to call upon the head of our school to share her experiences and views. Now, I would like to call upon head boy of our nutrition department from our state to share their experiences with me about the nutrition department as a head boy.
download करिए। Memorable moment for the head boy of our school as our ma'am is presenting the session and memento to him. Who is
के नए लड़कों को भेजो ना यार, मैं बार बार थोड़ी ना उतर के जाऊँगा पीछे करने को। उनको भेजो ना यार पीछे, उनको बाहर करेंगे सबको। लेके फोन करें तो क्यों बाहर आओ, जाली से यार, सबको जाली से बाहर। Krishna
बोले भैया 1 घंटे बाद नेट बैटरी चेंज होती है इसकी, बोल दीजिए अभी। Dr. Mansi Arora, pediatrics, thank you ma'am for attending the annual day celebration of St. Andrew's Sports School, Jagatpuri branch.
से डॉक्टर इस वक्त इंसानियत के भगवान है। खाकी में निकले वीर सिपाही को हर हिंदुस्तानी का सलाम है। घर में रहकर हर नागरिक दे रहा अपना योगदान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। पूरी दुनिया का दुश्मन अब एक है, पृथ्वी अब जंग के मैदान है। सरहदों पे आज भी सिपाही दे रहे प्राणों का बलिदान है। माना कि वक्त है मुश्किल, पर इरादे अब चट्टान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। सोनू चेंज कर फटाफट, चेंज कर Audience, a blistering round of applause, everyone. Now, on the other hand, we present the achievements of 35 years of our school. Very good afternoon to all ladies and gentlemen present over here. Here I am going to present the annual day report session 2023-24. First of all, I would like to thank Mrs. Madhu Arora, our honorable and staff, for providing me with this opportunity to share with you about the achievements of our school and proud stories with our respected audience. Annual Day celebration. As we all know, this is a very important occasion for us all. Apart from the fact that it highlights our school's continuous
would like to invite manager of our school, Mr. Vishal Talora, to share his valuable thoughts as the school has completed 35 years of imparting excellence in education. Please, sir. Good afternoon, everyone. Welcome to all our annual day celebrations. And I hope you are having a good time. Students having some activities at the back. Okay. Let me learn this activity. First of all, welcome everyone again to the annual celebrations. And I want to all you guys to show that your child is good man and St. Anthony's. And we at St. Anthony's staff, our neighbors, our teachers, our parents, staff, are working constantly, relentlessly, and tirelessly to give out new ideas and new ways of teaching your child. And we know how important school is, the role in our child's life. So that we are very well aware of, and we want to be really just sure. As we all know, this is an era of science and technology, and like the other members, our school is the first education holder in science education, science school, science drama, even years. This shows how well our students are doing in science and technology. And again, this is the world that's present in their language next year. And we are trying to do this in a lot of people in India right now, and we are trying to do this. In fact, we say for students to learn to use it. We are taking a new science lab, and we are trying to put AI tools and we are tools in science lab for the learning environment here. And we will be organizing for students. After that, I need to do a report and I said that
perfect representation of our Punjabi culture is the dance. Fly to the moon and back, carrying the dream of million noble kids. That is Chandrayaan. The Indian Space Research Organization was founded in 1969. Over the years, ISRO has made significant strides in space exploration, launching satellites for communication, weather prediction, and scientific research. Notable milestones include the launch of Mars Orbiter mission in 2013 and Chandrayaan mission to the moon. ISRO continues to advance with plans for interplanetary exploration and strengthening its position in the global space community. Let's welcome you. Our students of class 3 representing the journey of ISRO. 22 अक्टूबर 2008 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का पहला प्रमुख अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। इस मिशन में उद्देश्य था चंद्रमा की सतह तक पहुंचना और विज्ञान का अध्ययन करना था। चंद्रयान 1 में रहस्यमय चीजों की खोज, जिसमें उपाधियों की उपस्थिति और भारतीय पदार्थों की खोज की। इस मिशन में चंद्रयान 1 ने मानव इतिहास पर पहली बार पानी की खोज में सफलता दी। साथ हमारा मांग रहे, विज्ञान से भारत सींच रहे, इतिहास के पन्ने छाप रहे। फैसला मुझे इसरो, फैसला मुझे इसरो, फैसला मुझे इसरो, फैसला मुझे इसरो, फैसला मुझे इसरो। जुलाई 2019 धरती से चल दिया था चंद्रयान 2 हमारा। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को इस बड़े डेस्टिनेशन की मून 20 अगस्त 2019 चंद्रयान 2 पहुंच गया था मून के ऑर्बिट में। 6 सितंबर 2019 को चांद पे लैंड होने में सिर्फ 2.1 मिनट पहले ही चंद्रयान 2 ने लॉन्च कर दिया अर्थ से कॉन्टैक्ट। कंफर्म लेटर दैट द स्पेसक्राफ्ट वाज क्रैश लैंडेड ऑन सरफेस ऑफ द मून।
All the students, report session number 110. All the students. हेलो ये ऊपर कौन वॉक कर रहे हैं टेबल पे Oh wow! What a fabulous meeting it was! Let's move on to our next performance. Our title of class 12 will showcase their talents and resonance with their beautiful performance. So please welcome the students of class 10 for the next performance. Love
बच्चों, एक न्यूज़ देने आई हूँ। कल जो टेस्ट होने वाला था वो पोस्टपोन हो गया है।
आएंगे किससे मसला होंगे हम ये
कार्ड दे दे, कार्ड भी चेक करना उसके बाद आज के बाद चेक Thank you.
अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का अकाल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले बात का साथ भोलेनाथ का सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का डरना किसी बात का भोलेनाथ का सर पे मेरे हाथ भोले तेरे आशीर्वाद का शिव शंभू शिव शंकर तेरा नशा है चढ़ा बस हम पर लेके ना बोलेगा अपनी हालत में न है कोई ख्याल भोले में मैं मगर वो जानता है सबका हाल दोस्तों के भोले में कोई सारे भोले में भूल गए हैं अपनी जब से मन लगा है भोले में बम 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 भोले भोले
position holders for the cabinet session 2022-23, please come to the stage. I repeat, first position holders for the session 2022-23, please come to the stage. Welcome again. Yes, ma'am. It's hard for we elders to learn how to become social and welcome the guests with a smile on the face. So, chalo friends, dear audience, Aadi, let's learn how to welcome the students of campus.
तुमने चमके कुर्ती सिलाई बज गई शहनाई तो दिल मेरा ये दिल मेरा तो दिल मेरा सो गया बाहों से तेरा सो गया ये दिल मेरा सो गया बाहों से तेरा सो गया Please come down. Next up, please come here. Near the podium. आप इधर आ लो कार्ड खत्म होने वाला, ध्यान रखिए 70-80 मोटर होती है। ये सही लेना, तुम्हारा वाला ये लेना ना, ये लेना ये वाला नहीं लेना। ये फ्रेम लेना। ये फ्रेम लेना। ये ना, ये तो बोल रहा हूँ, ऐसा ही है। ये फ्रेम देखो, ये तो फ्रेम है ना, मतलब और आगे ये ले लूँ, ये वाला
मैं हटा दूंगा, कोई बात नहीं, चालू होगा I तो। would like to invite our honorable head of the school, Mrs. Madhu Arora, पूरा फ्रेम नहीं आएगा to give award to the teachers. यार, जो चीज़ चाहिए तो वो तो आएगा ही नहीं ना। Although all students, all teachers are very good, but some teachers have very worked hard. So it's time to acknowledge the hard work and efforts of those teachers. First, I would like to invite Ms. Chetna on stage. Ms. Chetna, please come on the stage. आ रहा हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ। सोनू देखियो, मैं आगे जा रहा हूँ। Congratulations, Chetna ma'am. Under the guidance of Ms. Chetna, the students of our school won first prize in science drama at zonal level. The students of the school had first prize in science exhibition at zonal level and district level both. Congratulations, Chetna ma'am. I would also like to invite manager of the school, Mr. Nishant Arora, on the stage. अब आगे जा खड़ा हो जाऊँगा भाई। हाँ जी, ठीक है। Now I would request Mrs. Monica Kaushal to come on the stage for receiving the exceptional performance award. Mrs. Monica Kaushal, please come on the stage. The school participated in science tour competition at zonal level in 2022-23 session and clinched first prize. वो चाचा यहाँ से आ जाएगा, आ जाओ यहाँ पे। मेरा भी वही है, आ जाओ। In the session 2023-24, that is the current session, the students of the school got first prize in the whole zone 3 in science exhibition, and then they went on and competed at district level. They won first prize again. Congratulations, Monica Kaushal ma'am. Now, I would like to invite Mrs. Seema Das. Mrs. Seema Das. यार सेंटर Learning and teaching are two distinct and interconnected tasks. In our school, there is a teacher who is very creative, very talented, Mrs. Seema Das. Congratulations, Seema. Now, it's turn of
न्यू आएगी कल के ज़्यादा नहीं आएगी सुना है मैंने बात भी आया ये बात तो नहीं है क्या एक भी तो यहाँ देखो Now, क्या प्रेम है I would like to invite Mrs. Kalpana Sharma, Mrs. Nima Joshi, and Mrs. Prerna Sharma on the stage. Their contribution to the academics is very impressive and remarkable. Please stop the music. उनको आगे बुला लेना बोलो 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 आगे आने के लिए बोलो 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 आगे आने के लिए बोलो The award ceremony for the teachers is not over yet. Now, I would like to mention the contribution of Mr. Prince Mavi, our sports coach. बस ठीक है ठीक है ठीक है Trained the students and clinched many trophies.
गया भैया सुनेंगे। अरे बोले क्या पता यार, समझता नहीं बात को। Jaspreet and Bhumi are receiving the award, Exceptional Performance Award, because of their excellent academic performance. They are the luminaries. Please clap for them. Congratulations, Bhumi and Jaspreet. इसके बाद चेंज कर दूंगा, इसके बाद क्या हुआ? करो करो करो। भैया नहीं है? अरे तुम कर दो यार, भैया नहीं है कर दो भैया। पक्का? singing with delight. So, please put your hands together and be a part of English singing chorus. बेटा ये लगा लूँ, छोड़ दूँ ना, ये लगा के इसलिए ना छोड़ दे, बाद में देखेंगे बाद में। बटन दबा के छोड़ दूँगा।
Hey, left lang. Very sweet and melodious. Hello. Very hungry. Our chief guest for today's annual day celebration has arrived, Mr. Shashank Jaiswal. He is an IPS officer. कराटे में भी तो उनकी बारी है, वो बड़े अभी उनके बाद कराटे वाले आएंगे। ये आगे सामान आ रहा है। Now, one of the students, Arav Verma, class 5th C, will show one magic show. You will enjoy. Arav Verma. Today is not just a day, it's a page in the book of our school's journey. And it's my pleasure to welcome the chief guest of our annual day celebration, Mr. Shashank Jaiswal. मैजिक दिखाएगा ये। Good evening, everyone. My name is Arav Verma. अरे आगे बढ़ो, टेबल आगे। बेटी, 2 मिनट, yes. On behalf of the management committee and Andrew's family, I welcome our chief guest, Mr. Shashank Jaiswal. I would like to invite the honorable head of our school, Mrs. Madhu Arora, to come on the stage with the management committee members. And the chief guest of the function, Mr. Shashank Jaiswal. Please come on the stage, sir and ma'am. Mr. Shashank Jaiswal is an IPS officer
a private job, you serve yourself and your organization only. And in civil services, you can serve the country. Really inspiring. Very determined, our Chief Guest, our Honorable Chief Guest, Mr. Shashank Jaiswal, an IPS officer. Mr. Jaiswal and his team have recovered missing children, and in these type of cases, the greatest reward, according to him, comes from seeing the tears of gratitude in the eyes of parents. Really great, sir. Sir, you are doing the best job, serving the society as well as the country. Heartfelt gratitude. Just like every year, this year also we have launched yet another edition of our school magazine, Blossom. I repeat, Blossom. Blossoms are school magazine showcases creativity of our teachers and our squatters. Beautiful cover page of our school magazine, Blossom. In this era of technology, we publish e-magazine also. Now I request our Honorable Chief Guest, Mr. Shashank Jaiswal, to please say a few words. सबसे पहले जो है संभव को मिलके एक मेरे साथ बोलेंगे 3 बार हम लोग जय हिंद। और ऐसा लगता है आप लोग ने खाना दिया है तो ना उन्हें करेंगे आप लोग खाना करना है जय हिंद। और जय हिंद। एक बार लास्ट बार बोलेंगे जय हिंद। देखिए आपने मुझसे पहले बोला फिर मुझसे एंड में बोला आवाज तेज होनी चाहिए, ठीक है। अब आप 4 बार आपने बोला तो हमारे पास आपको आवाज तेज सुनाई, तो आपको लाइफ में 4 बातें नहीं मिलेगी, ठीक है। आप सारे बच्चों को बोला करो लाइफ में 4 बातें नहीं मिलेगी, आपको अपना बेस्ट पहली बार मिलेगा। एनीथिंग नॉट डूइंग वेल। और ये पेरेंट्स के लिए भी, पेरेंट्स जैसे कि मेरे पिताजी ही यूज्ड टू वर्क
3000 का महीना कमाते थे। उसके बाद भी अगर वो करके आ रहे हैं 9 बजे भी 10 बजे भी, उसके बाद भी मेरे ब्रदर और मेरे फादर मेरे साथ बैठते थे, मुझे पढ़ाते थे रात के 10 बजे। पेरेंट्स में मैं भी पेरेंट मेरा भी बेटा पढ़ता है, और जो मेरे पिताजी ने मेरे साथ किया कि भाई आते हैं और उनके साथ बैठ के पढ़ाते हैं, आधा एक घंटा इससे बच्चों को कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना। तो जो मेरे पिताजी ने अभी पुलिस की है जॉब बहुत एक्टिव है, बहुत अनशेड्यूल्ड है, तो हमें नहीं पता कि टाइम का हो जाएगा, हमें नहीं पता कि चीज़ें का होने वाली है ना। पुलिस की जॉब बहुत अनशेड्यूल्ड है, उसके बावजूद जब भी मुझे समय मिलता है, खाना मेरा 10 बजे भी आ रहा हूँ, मेरा बेटा खराब है या बीच में मुझे समय है और ही एट होम, तो मैं साथ में बैठता हूँ, उसके साथ मुझे पढ़ाता हूँ, ये वेट पापा कब आओगे। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लोग जो है कहीं वो वर्किंग या मैम खाना बना रही है या फिर पापा कहीं बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे मतलब नहीं होगा आपका काम। और आप सोचे कि मैंने जो टीचर लगा दिए 4-5 स्कूल में जाता है, टीचर के पैसे देना आपका काम नहीं है, ये स्कूल के पैसे देना भी आपका काम नहीं है। स्कूल में जैसे टीचर्स पढ़ाते हैं बच्चों को और आप जैसे पढ़ाई होते लोग जाके मिलते हैं, नहीं तो आप टीचर्स के साथ कॉन्टेक्ट में रहिए कि कैसा चल रहा है। टीचर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है, मेरे फादर मैंने दोनों मिलकर रहे कि टीचर्स को भी कॉन्फिडेंस आता है और बच्चों को ज़्यादा बनाने के बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आता है कि आगे बढ़ना है। आप लोग मुझे ऐसा लगता है कि अगर बच्चे को आगे बढ़ाना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लोग से कैसी बातें होती है मुझे लगता है कि मैं क्या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे के साथ समय लगाएं। आप सब आज भी समय निकाल लिया है और पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यहाँ से आए हैं, यही पास में काबरा में सरकारी स्कूल से पढ़ने वाले हॉस्टल गया, उसके बाद मैंने जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो बहुत अच्छे रहे और IIT को छोड़ के देश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज मेरे पेरेंट्स से फील नहीं होगा, फिर भी अगर आज मैं देखता हूँ जो मैं अपने बेटे को देखता हूँ तो 5% में नहीं मुझे तय करा, लेकिन आपका जो समय है उससे आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। देश के हर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, उसके बाद उसके बाद पापा ने जबरदस्ती मतलब 3000 रुपये वाले कमाने वाले व्यक्ति ने जबरदस्ती उस समय में वो कोशिश कर रहे जबरदस्ती मेरा कहीं प्रैक्टिस कराया नहीं MBA होगी, तो जबरदस्ती MBA के लिए मुझे प्रेरित किया और IIM से मैंने MBA किया और गाँव में हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला कैबिनेट में 100% चाहिए नहीं, तो मतलब दिस इज हाउ यू हैव टू। उसके बाद जब क्योंकि तो नहीं था उसके बाद MBA जब किया तो उसको मैं लोन था, उसके बाद आई वर्क विद जिंदल सिंह, आई वाज EA में। तो जब मैं एकदम मुझे आइडिया कैसे लगा तो मैं IAS कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। तो अब मैं क्यों बता रहा हूँ आपको ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। मैंने एग्जाम तो कर दिया, मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की, जब प्रिपरेशन नहीं की एग्जाम कर दिया तो सडनली इंग्लिश मार्केट का एग्जाम मैंने घर में बोला कि मम्मी मेरा एग्जाम में प्रिपरेशन तो पता ही नहीं होता क्या है एग्जाम का आता क्या है, तो मैं लड़ने लगा। लकीली ऐसा हुआ उस समय मेरी जल्दी मुझे घर के पास नहीं था, मैं कहता चला एग्जाम तो मेरे को करेगा, तो एग्जाम देने गया। 2 एग्जाम होते हैं, अभी भी इंग्लिश के 2 एग्जाम होते हैं, एक जनरल नॉलेज बोलते हैं और एक लॉजिकल रीजनिंग, क्वालिफाई करता है क्वालिफाई नहीं है उसमें मार्क्स भी बोलते हैं। तो 200 से अराउंड 170 मार्क्स आए थे याद नहीं लॉजिकल रीजनिंग में, और जो जनरल नॉलेज और बाकी सामान्य ज्ञान जो उसका था उसमें 200 से 80 या 90 है बिना प्रिपरेशन। क्यों? बिकॉज मैं रोज पेपर पढ़ता था, आसपास की चीज़ें जो मैडम पढ़ाते हैं स्कूल में या फिर आप बाकी नॉलेज वगैरह करते हो ना, आपको लगता है कि यूट्यूब के रील से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है, तो ऐसे ही आपको नॉलेज आ जाता है। बिकॉज इट टेस्ट योर नॉलेज ऑन डेटा कि हाउ यू आर बिहेविंग इन रियल लाइफ सिचुएशन। तो रियल लाइफ सिचुएशन और रियल लाइफ सिचुएशन आते हैं जब आप अपने
गेन करते रहो। तो इस संबंध को ये जहाँ पर भी आप अखबार पढ़िए और किताबें पढ़िए, उससे आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो आप यूपीएससी जैसे एग्जाम में बिना प्रिपरेशन के आई क्वालिफाइड फॉर ट्रेनिंग, उसके बाद एक प्रिपरेशन जैसे आई प्रिपेयर, तो टीचिंग के इंजीनियर खुले रहने चाहिए। और जो एक और बात बच्चों को कहना चाहूँगा कि अभी हम 8वीं क्लास के बच्चे कभी लगता है कि हम बहुत सीख बन रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं, कभी मम्मी पापा की बातें सुनना बंद कर देते हैं। तो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, जब मैं पेरेंट्स की बात या फिर अपने टीचर्स की बात सुनता था तो एक्चुअली अचीव समथिंग लाइक तो सुनना बंद कर देता था। तो डाउन फॉल की एक्चुअली तो आपको अपने पेरेंट्स की बात करनी चाहिए और अपने टीचर्स की बात अवश्य सुननी चाहिए और आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। मतलब आपको जो इधर उधर की निकाल की बातें हैं उनको ध्यान नहीं देना चाहिए और ये आपको ऑलवेज लुक पास इन लाइफ और लाइफ बहुत अपॉर्चुनिटी आपको देता है। आपको लाइफ में बहुत सब कुछ करने के सारे मौके मिलते हैं। तो अभी सब कुछ करने का टाइम, अभी आपका काम जो है उसको करिए। और बस मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इन्वाइट किया यहाँ पे और सर्टिफिकेट आप ठीक है। प्रोग्राम के वजह से आया है, मतलब प्रोग्राम की वजह से ऐसा नहीं प्रोग्राम चलो एक बार और लास्ट में जय हिंद। Thank you, sir. Very well said. Thank you for encouraging and motivating our students and our university. Your determination has brought you all the way where you are right now. Thank you, our chief guest for this annual function, Mr. Sushant Jaiswal, IPS officer. अच्छा वो टेबल आगे करवानी है, ध्यान से। Now it's time for magic show. Arav Verma, class 6C. Good evening, everyone. Rahul sir, please come near the stage. Rahul sir.
Ma'am, please come on the stage. I would also like to invite our honorable head of the school, Mrs. Madhu Arora, to come on the stage and welcome Mrs. Rekha Tomar, and in charge of the school, Kids Pride. The principal of the school, Kids Pride. Thank you, ma'am. Next in the pipeline is spectacular judo performance. अबे और लोगों को तो पीछे आके देखो थोड़ा पीछे आओ बच्चे फलक का दस्तूर, खुदा का हुक्म और एक माँ की दुआ है। हेलो ये हाथों की लकीरों की तुम्हारी सल्तनत।
Go!
ब्लास्ट में नीचे आ गया था मैं Now enjoy the magic show by the students of class 5th. Arav Verma. बोलो 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 ये टेबल आगे करेंगे ये खड़े हैं
बच्चे के लिए बोल रहे हैं। Students of second position, please come near the stage. Students of second position, please come near the stage. Now, let's welcome the students of class 8 who are going to present before you a dance sequence that will make your feet tap with them. Let's welcome Thank you.
to give award to the brilliant students of the school. The students who got second position in the session 2022-23. For this, I would like to invite our Honorable Headmistress Ma'am, Mrs. Madhu Arora and Mrs. Saloni Arora on the stage. Ayush Jalwar, son of Arvind Kumar Jalwar, Pushpanjali Bagarwal, first A. Jagrit Tiwari, son of Ashwini Tiwari, Lucky Tiwari, first A. प्रॉपर है son of Shahabuddin Ali, Kausar Begum, first B. Mohammad Shayan Samar, Mohammad Samre Alam, Sahabat Kalvin, first C. Adisha Gautam, daughter of Aditya Gautam, Sarika Gautam, second A. Simra Ansari, daughter of Mukhtar Ahmed Ansari, Salma Ansari, second A. Brahma Malik, son of Rohit Kumar Malik, Simran Malik, second B. Ashpreet Singh, son of Mandeep Singh, Anu, third A. Ruby Gupta, daughter of Pankaj, Neha Gupta, third B. Drishti Gupta, daughter of Gaurav Gupta, Deepika Gupta, fourth A. Janvi Pal, daughter of Sanjeev Pal, Poonam, fourth B. Yatika, daughter of Mor Singh, Priyanka, fifth A. Navya Gupta, daughter of Nikhil Gupta, Pooja Gupta, fifth B. Drishti Kumari, daughter of Nipin Kumar, Sarvesh Devi, 6A. Adhyasha, daughter of Akshay Kumar, Divya, 6B. Naman, son of Umesh Singh, Priya, 6C. Arav Gupta, son of Gaurav Gupta, Shweta Gupta, 7A. Ishika Rastogi, daughter of Viraj Rastogi, Anjali, 7B. Bhakti Gupta, daughter of Mukesh Gupta, Neha Vashne, 7C. Akshat Gupta, son of Amit Gupta, Suniti Gupta, 8B. Congratulations to you all.
Saloni Arora to say a few words. The students who participated in science competition, exhibition, slogan writing, please come near the stage. Today we are celebrating 35 years of excellence in education. So it is very important to acknowledge the achievement of our self-ended sport family. It is a great honor for me to have you all here. I want to thank everyone, Mrs. Madhurana, for showcasing our glorious journey of 10 years. In front of you all, under the guidance of her, our school has shown the best performance in various fields. So, as we know, the Disha era science and technology, and our school has been consistently doing a very great job.
it's time to acknowledge the efforts of the students who took part in science exhibition this year and won first prize. I would like to request head of our school, Mrs. Madhurura, to please come forward on the stage and give a word to our brilliant students. I would also like to request Mrs. Saloni Arora to come on the stage and join the award ceremony. Please, ma'am. A student of class 6 section A, Divik Bansal, gets 100% attendance award. He took admission in class nursery and he has never taken even a single leave. Great. 100% attendance award is presented to Divik Bansal. Bhakti Gupta, Akshara, student of class 8, participated in science exhibition and won first prize in zonal and district level. At zonal and district level, Bani Gaur also participated in sub-junior slogan writing competition and bagged first prize. Congratulations. Please clap for them. Means a lot. They won first prize at zonal level and then at district level. Now the school, they will present the school at state level. Congratulations to all of you. Congratulations to the team. Congratulations to our headmistress ma'am. Ishita Yadav, student of class 8, also participated in science exhibition competition and got the award. Really nice. They have got the certificates and trophies from Science Center also. Thank you, ma'am.
The students who got third position in the academic session 2022-23, please come here to the stage.
Monterrey, Mexico. I would like to invite headmistress of our school, Mrs. Madhu Arora and Mrs. Saloni Arora, on the stage for presenting the certificates and awards to the third position holders for the academic session 2022-23. Ma'am, please come on the stage. उधर वालों को भी इधर से भी बोलो ना। सामने से मिरर लाऊं क्या? Manager of our school, Mr. Nishant Arora, please come on the stage for this award ceremony.
Faiz Alam, son of Khurshid Alam, Shabnam, first A. Ahab Khan, son of Muhtari, Asma, first B. Jasreen Jamal, son of Khalid Jamal, Bega Jamal, first B. Gopal Gautam, son of Rajan, Pooja, first C. Shresh Gupta, son of Nitin Gupta, Sakshi Gupta, second A. Akshat Jain, son of Gaurav Jain, Anuradha Jain, second A. Anvi Jain, daughter of Sugam Jain, Chavi Jain, second B. Parth Kapoor, son of Varun Kapoor, Sakshi Kapoor, third A. Vivan Nayyar, son of Lokesh Nayyar, Nisha Nayyar, third B. Aradhana Ghosh, daughter of Chandan Ghosh, Neha Ghosh, fourth A. Manan Ratan, son of Kamal Ratan, Priya Ratan, fourth B. Drashika Raj Sirotia, daughter of Pradeep Sirotia, Kamini Sirotia, fifth A. Utkarsh Rastogi, son of Dheeraj Rastogi, Anjali, fifth B. Shaun Sharma, son of Manish Sharma, Shivangi Sharma, sixth A. Harshita Agarwal, daughter of Sunil Agarwal, Sangeeta Singhal, sixth B. Shivangesh Kumbhkar, son of Uttam Kumbhkar, Latika Kumbhkar, 6C. Ojas, son of Ravi Kumar, Indu Rani, 7A. Daman, son of Navpreet Kaur, 7B. Ishika, daughter of Abhishek Yadav, Poonam Yadav, 7C. Atiya Jameel, daughter of Zamir Ahmed, Rukhsana, 8A. Mishti, daughter of Manish Manda, Rinki, 8B. Congratulations to all of you. Please clap for them. Position holders. They got third position in the academic session 2022-20. Now, I would like to call upon Mr. Pradeep Soni, our maths teacher, and Mrs. Sangeeta Mathur, Sanskrit teacher, to please come on the stage. Our honorable head of the school, Mrs. Madhu Arora, will now present the trophy to Mr. Pradeep Soni and Mrs. Sangeeta Mathur for their contribution in the academics. Our maths genius, Mr. Pradeep Soni. Congratulations, sir. Please clap for him. Very appreciate Mrs. Sangeeta Mathur getting the award from the head of our school, Mrs. Madhu Arora.
Congratulations, sir. Now, I would like to invite Mrs. Preeti Sharma to come on the stage. Now, I would like to invite Mona ma'am, our nursery teacher, to please come on the stage. Congratulations, Preeti ma'am. Mona ma'am, heartiest congratulations, my co-anchor. You deserve it. What is a life is full of care? We don't have time to stand and stare. We used to say, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब. But the saying has changed now. पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे लाजवाब.
Now Yash Sharma will show you the solo performance. Yash Sharma participated in CIT and won the award. He got fifth position in Super Dancer. मैं तुझको चुना है वो
Second position, Manav Purni, class 5th section C. And third position, Chitresh Kumar, class 2nd section B. Congratulations to you. Our man is presenting the medals to the winners, Sameer Khan, Manav Purni and Chitresh Kumar. Once again, congratulations. The girls of our school participated in zonal sub-junior chess competition. The names are Prashi Sindel, Tanishka Sharma, Suhani Khan and Pratishtha Mehta. Prachi, student of class 7 section A. Tanishka, student of class 7 section A. Suhani Khan, student of class 8 section B. And Pratishtha Mehta, student of class 8 section B. They got first place. Girls power. Congratulations. Please clap for them. The girls of our school participated in junior sub-junior volleyball competition and under 14. The names are Insha Zara, student of class 7 section A, Akshita Singh, student of class 7 section A, Tanishka Juneda, student of section 7, class 7 section A, Prachi Sharma, student of class 7A, Ritika, student of class 7 section A, Vanya Malik, again student of class 7 section B, Karan Shah, student of class 7C, Nadia Parveen, student of class 7C, Sakshi Samani, student of class 7C, Janvi Bansal, Thank you, parents. Please see our grand finale. Parents, nobody is saying. It's
प्यार